क्या लाइट कर रहे हैं यार, ये यार उसको भी यार। गर्भ संस्कार और गर्भ विज्ञान के विषय हमको ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक है, बहुत अच्छे अगर समझते हैं तो कोई आध्यात्मिक उसको मानते हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक बनाना, ये जो हमें संघीय संसद को जो आज्ञा मिली, सूचना मिली या एक प्रस्ताव मिला, पिछले 20 साल से इसमें काम करना हुआ। अभी आपके सामने जो रखेंगे वो इस विषय को आधुनिक समय में लोगों को कैसे कन्विंस कर सके, लोगों को कैसे समझा सके, लोग उसमें कैसे मानने लगे कि करना चाहिए। इस तरह से आपके सामने मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब भी हूँ कि माननीय भैया जी इन्होंने फिर सूचना दी, आज्ञा दी, आज्ञा होती है। हमने इस काम को जब शुरू किया था और मुंबई में हमको एक बड़ा कार्यक्रम करना था, हमने बोला आप ही आइए, हमने कुछ काम किया तो भैया जी ने कहा हमको प्रचारक है, हम इस बच्चों वाले कार्यक्रम में आके क्या करेंगे, चलिए आप देखिए आपके बच्चों ने क्या किया है, तब उस पर आए। तो आज फिर से इसमें उनको प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं, तो हमें बहुत खुशी है। सब काफी परिचय दो या बात करूँ ये कोई मुमकिन नहीं है, मुझे तो विषय की प्रस्तुति करनी है, तो मैं सीधा विषय पे जाऊंगा। देखो ये जो विषय है साइंस ऑफ बेस्ट प्रोजेनिटी, आप गर्भ संस्कार बोलेंगे तो भारतीय लोगों को तो अच्छा लगता है, अपना लगता है, लेकिन ये साइंस है तो फिर गर्भ विज्ञान बोलना पड़ेगा। गर्भ संस्कार शब्द मैं आपके सामने यही कोशिश करूंगा कि संस्कार का एक्चुअली मीनिंग क्या है, जो एक साइंटिस्ट को करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, या जो भारत करता था। हम लोग संस्कार यानी चंदी बिंदी धोती चोटी वो तो है, वो हमारे बाह्य जो बाह्य चिन्ह है वो तो है, लेकिन एक्चुअली एक साइंटिस्ट, एक ऋषि उसको कैसे समझता है वो बताने की इसमें पूरी कोशिश है। अभी एक नया विषय आया कि तीन लोगों का डीएनए मिला के एक बेबी यूके में पहली बार विश्व में तैयार हुआ। अब ये उनके लिए नया है, हमारे लिए तो ये बहुत पुराना है। मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि हम लोग कुछ भी कर सकते थे, क्लोनिंग करना है, सरोगेट मदर है, या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करना है, या जेनेटिक अपडेटेशन करना है, जो भी है हम लोग करते थे और आज भी करते हैं और हमारी विद्या से करते हैं। हमें सिर्फ समझने के लिए कुछ उनका टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और वो आपके सामने प्रस्तुत है। देखो हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा क्यूट हो, सियाना हो, दिखने में अच्छा हो, गोरा हो, चिट्टा हो, आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान हो, लता मंगेशकर जैसा हो, उसकी आवाज हो, सबकी इच्छा होती है और उसका राइट है। हर माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए। तो ये बात लोगों को सिर्फ मन भावन, दिल लुभावन या हैप्पी गो लकी नहीं होती। ये भारत इसको सोच के बोलता था कुछ भी करने के लिए। तो हमको लगता है कि शिवाजी महाराज की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन और शिवाजी महाराज के चित्र लोगों को गिफ्ट करते हैं या उसकी जीवन चरित्र बच्चों को सुनाते हैं, दिखाते हैं। मुझे भी प्रश्न होता था तो शिवाजी महाराज को कौन सा चरित्र सुनाया गया होगा, शिवाजी महाराज को किसका चित्र दिखाया गया होगा। अब विवेकानंद जी की माँ विवेकानंद जी को भुवनेश्वरी देवी क्या बताती होगी। हम लोग को विवेकानंद जी तो आइकॉनिक लगते हैं और उन्हें भाई, लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ कभी रुकी नहीं थी। तो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, हमारे यहाँ व्यक्तित्व था, व्यक्तिमत्व था। तो वो व्यक्तित्व कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये कोई कहानियां नहीं है। शिवाजी कैसे आए, एक मुगल बादशाह के पास पिता कुरलिस बजाता है और माँ तय करती है, यानी उसकी पत्नी तय करती है कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा, बच्चा तो इसका ही होगा लेकिन वो नहीं होगा। तो माँ जीजा माता, समर्थ रामदास जो फिर विद्या गुरु, राजा कौलदेव, और कुल मिला के जो एक चरित्र बनता है, जो प्लान बनता है,
ये प्लान प्रोसीजर है साइंटिफिक में। ऐसे हमने 100 चरित्रों के ऊपर पहले हमने लिटरेरी रिसर्च किया है। प्रहलाद की बात हमने सुनी है, लेकिन प्रहलाद किसका बेटा था? तो हिरण्यकश्यप का, राक्षस का बेटा। और वो गया तो उसकी पत्नी थी, उसको लगता था कि मेरा बेटा इसका बेटा हो, लेकिन इसके जैसा ना हो, क्योंकि वो तो ऋषि कश्यप की संतान थी दोनों, लेकिन राक्षस बोली गई। अब ऋषि कश्यप तो दीति और अदिति 2 पत्नियां थी, वो आप सब जानते हैं। लेकिन कश्यप के घर में, ऋषि के घर में कैसे राक्षस संतान पैदा हुई? तो अनियतकालीन संभोग था। एक दिन शाम को दीति को इच्छा हुई कि मुझे कंसीव होना है, मुझे संभोग करना है। शाम का समय था, संध्या का समय हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो ऋषि ने बोला कि ये नहीं कर सकते देवी, कि नहीं, मेरी तो इच्छा है। अब पत्नी के सामने विवश होना या सभागार में नहीं, कहीं भी बैठे हुए पति को आप पूछिए तो वो हो ही जाता है। पत्नी के सामने विवश हो गए ऋषि कश्यप, और उस अनियतकालीन यानी संध्याकालीन संभोग से ऋषि कुल में 2 राक्षस संतानें पैदा हुई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब इस कहानी के ऊपर हम 1-2 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो बताना है आपको कि ये क्या जेनेटिक, क्या है, एपिजेनेटिक्स है, कि ये कैसे कुछ विचार भी गर्भ के धारण के समय या सीमेन के ऊपर या ओवम के ऊपर क्या असर करता है, वो मुझे बताना है। ऐसे बड़े 100 एग्जाम्पल भारत के इतिहास में जो है उसके ऊपर हमने काम किया। पहले तो लिटरेरी रिसर्च का काम हुआ। तो लोग कहते हैं कि क्या डिजायर क्या पॉसिबल है? यहाँ सभागार में 151 दंपति डॉक्टर अनिल गर्ग के कहने से आए हैं। इंदौर नगरी में कल जब उतरा डायरेक्टर बताया कि ये स्वच्छ नगरी, तो मैंने बोला स्वच्छ नहीं, ये संस्कारी नगरी भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्वच्छता क्या है? संस्कार नगरी है। तो ये संस्कार नगरी कब बनेगी या है? क्योंकि यहाँ देवी अहल्या जी ने कुछ किया है। उसको आगे कैसे बढ़ा? अब अहल्या देवी तो चली गई, लेकिन इस इंदौर उस विरासत को कैसे और आगे बढ़ाएगा? इसके लिए 151 दंपति के लिए भी ये प्रश्न है कि क्या डिजायर चाइल्ड, इच्छित संतान मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन ये आप सबके लिए है और उसी दंपति के लिए भी है। बड़ा प्रश्न है कि ऐसा बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है? ये CDC का मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, US का है, अमेरिका का, जो पूरे विश्व के बच्चों जो जन्म रहे हैं, जितनी डिलीवरी हो रही है, उसके बाद का पूरा वो ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो कितने बच्चे जेनेटिक प्रॉब्लम से आ रहे हैं या कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और कितने रोग जो जिसको आनुवांशिक रोग कहते हैं वो बढ़ रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। कम से कम इसको रोकने के लिए भी हमारा गर्भ संस्कार क्या उपयोगी है। प्रॉब्लम है जीवन शैली। हमारी जो जीवन शैली है मिसमैच है। कोई कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध होगा, अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध होगा, तीसरा विश्व में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कहते हैं ऐसा होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एटम बम लेके घूम रहे हैं। हमारे खुद सबके DNA में ही वो जेनेटिक प्रॉब्लम है जिससे हम लोग डिटोरिएट हो जा रहे हैं। 50,000 साल में जेनेटिक डिटोरिएशन अब बोल रहा है। पिछले 100 साल में जितना हुआ है इतना 39,000 50,000 साल में नहीं हुआ है। ये बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये जंक फूड, ये इतने समस्या से हम घिरे हैं। तो ये पूरी पश्चिमी जीवन शैली है। तो हमें कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए आपके सामने कोई घर ऐसा है जहाँ डायबिटीज नहीं है, BP नहीं है, थायराइड नहीं है, इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस जिम्मेदार नहीं है। जैसे कोविड के सामने हल्ला हो गया था, ये वायरस है, इसमें तो कोई वायरस नहीं, तो भी रोग, कोविड से भी खतरनाक रोग हमारे घरों में आ गए। तो वो है जीवन शैली। तो रूट कोज मैंने बताया कि DNA में चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो समस्या है या हमारा जो समाधान है वो हमारे ह्यूमन DNA में है। और DNA कहाँ है, DNA क्या है, वो कोई साइंटिफिक प्रेजेंटेशन तो नहीं है। फिर भी इस साइंस को तो समझना पड़ेगा सब दंपति को। तो हमारे यहाँ ये सब जो आज जो डेवलप हुआ है आनुवंशिकी विज्ञान, ये कोई पश्चिम ने ढूंढा है या अमेरिका में ही है या विदेशी साइंटिस्ट हमको समझाएंगे तब समझेंगे, ऐसा एक्चुअली नहीं है। तो फिर क्या है? तो कोई भी DNA मॉलिक्यूल में से कुछ रिमूव करो, हटाओ जो टॉक्सिन्स है, खराब है, कुछ ऐड करो जो हमको चाहिए, जो इच्छित संतति चाहिए, हमें तो ऐसा बच्चा चाहिए। तो ये करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ये हमारे फूड में भी ये सब DNA मॉलिक्यूल में चेंज आ गया है। ये थोड़ी विद्या
तो उसको हमने एक रिसर्च के तौर पे 15 साल पहले एक फाउंडेशन तैयार किया। मैं थोड़ा बाकी लोगों को भी बोलना है, तो फिर भी मैं कुछ बेच बातें तो रखनी पड़ेगी। हमारे महर्षि सुश्रुत ने, जो प्लास्टिक सर्जन थे एक जमाने में हजारों साल पहले, उन्होंने बोला कि एकदम शास्त्र न अभी जानी, कोई एक शास्त्र से मत पढ़ो, आपका शास्त्र बढ़ाना है तो आप एलोपैथी, होम्योपैथी या जो भी शास्त्र है, जितने साइंटिस्ट है उसको मिलिए। तो हमारा जो बेज है इसके साथ जुड़ा है। तो डीएनए मिथाइलेशन करने के लिए हमारी पूरी गर्भ संस्कार की प्रोसीजर है। हजारों साल पहले तो हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है संतति की, वही डीएनए की डेफिनेशन। संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्र वंशम परंपरा, डीएनए जो लाइफ फॉरएवर। तो डीएनए वही संतति है। ये जो हजारों साल पहले की व्याख्या है महर्षि चरक ने और जो भी हमारे साइंटिस्ट ने गोत्र जो विज्ञान बताया, वो पूरा उसका क्रोनोलॉजी डीएनए में क्या है वो अभी इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हमारे जो डीएनए है वो गोत्र साइंस है। एक्चुअली वो गोत्र है, वो जेनेटिक मेकअप है, उसको देखना पड़ता है। तो हमने एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया कि कैसे उस गोत्र को देखते हुए कैसे उसमें क्या क्या विशेषता डालेंगे। तो ये पूरे जो साइंटिफिक डेटा कहाँ से हमने लिया, तो हमारे जो चरक संहिता है उसके 8 अध्याय है, उसको और आज के जो जितने ये साइंसिस है उसके साथ इंटरप्रेट 15 साल से कर रहे हैं। तो आपके सामने है। तो सम्यक करोति इति संस्कार, डीएनए जो इरेगुलर शेप में है या साइज में है या उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको ठीक करना, यानी सम्यक, जो स्वयं से उसको मालूम होगा, सम्यक उन्नतानुसारम सम्यक। तो सम्यक यानी कि ठीक करना। तो ये ठीक करना ये हमारी एक प्रोसीजर, और चाहे ऐसा और बढ़ाना, गुणों में अंतर करना, अपग्रेड करना डीएनए को, तो वो हमारी पूरी प्रक्रिया है। ये 3 जगह करते हैं, बीज भागावयव। ये हजारों साल पहले डीएनए तक की, क्रोमोसोम तक की ये चर्चा हुई थी। तो ये फिटस इज द हार्डवेयर बंच ऑफ स्टिक्स सॉफ्टवेयर। तो लड़की मैनार्की में थी तब उसने क्या क्या ध्यान रखा था, महामारी शुरू हुई तब की इम्पैक्ट उसके बच्चे में आती है। ये हमारा शास्त्र कहता है। हर जो महामारी आती है और महामारी शुरू होती है तब से लेके उनके बच्चे का स्वास्थ्य का, आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य उसमें रहता है। ये खैर बहुत डीप है बात। तो मैं तो जो प्रोसीजर हमने किया, तो हमने 90 डेज का एक प्रोटोकॉल बनाया कि ये शुक्र, आज जो शुक्र है वो 90 दिन पहले का जो हमने फूड खाया, आहार विहार का परिणाम है। तो हमको जो शुक्राणु चाहिए पुरुष का और स्त्री का बीजाणु चाहिए, उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने 90 डेज का प्रोटोकॉल बनाया, उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं। तो 4 बड़े कंपोनेंट है। जैसे कौन सा डाइट लेना, ऐसा नहीं कि ये डाइट लेना, ये करना, वो तो ठीक है, न्यूट्रिशन तो डॉक्टर अच्छा बोलते हैं, लेकिन पहले महीने में गर्भ का कौन सा अंग बन रहा है तो उसके हिसाब से क्या देना। तो महर्षि चरक ने हर मंथ का डाइट, हर मंथ का संगीत, हर मंथ के स्तोत्र मंत्र, हर मंथ के क्लोथिंग, कपड़े और सब उसकी डिजाइन तैयार की है। तो जैसे 5वें महीने में मन बनता है, तो मन सौम्य बने, स्वस्थ बने, कभी भी विचलित न हो, तो उसको क्या खाना चाहिए, उसको कौन सा राग सुनना चाहिए, उसको चंद्रमा की इम्पैक्ट होती है उस 5वें महीने में, तो मोती का कुंडल पहनना चाहिए वगैरह। तो उसकी पूरी डिजाइन बनाई है। और क्या नहीं खाना वो आप सब जानते हैं। तो ये पूरा उसका डेली शेड्यूल भी है कि कौन से वस्त्र पहनने, कौन से कलर के पहनने, कौन से फ्रेग्रेंस से स्नान करना, कौन सी एरोमा लेना हर महीने, क्योंकि हर 9 महीने में अलग अलग ग्रह की, प्लेनेट की इम्पैक्ट है। तो उसके हिसाब से पूरा डिजाइन किया है। योग भी ऐसा नहीं कि यही योग करो, ये आसन अच्छा है, वो तो सब अच्छा है, लेकिन गर्भ का हड्डियां जब बन रही है तो कौन सा आसन चाहिए, जब उसका हृदय बन रहा है तब क्या करना, स्किन बन रही है तब क्या करना। तो उस तरह से ये डिजाइन बना है। ये हमने पूरा उसका इको विलेज एक सेंट्रिक बनाया, जहाँ प्लास्टिक नहीं, स्टील नहीं। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा एक सेंटर बनाना चाहिए जो हमारा रिसर्च heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms,
fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out.
This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The reform express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma, this will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods.
Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new-age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021
with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREADS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREADS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREADS platform. 3. Link GEM with TREADS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs